Guys, sir will be joining in 5 to 10 minutes. Just wait. And we are also thinking, if you are thinking to go for tomorrow's one more extra class, you can request Yogesh sir. We have planned for the same, and if possible with Yogesh sir, we can do it tomorrow again. One more session on marine insurance. Just request Yogesh sir that you want a session. If he agrees and if it fits into schedule, then we can go ahead. The backend technical systems are ready with us for tomorrow's session. Abracadabra, gili gili. Thanks.
Okay. Good evening, everyone. I have started with the YouTube live and also given you the host rights also, so you Okay. can go ahead. Yeah. Thank you, sir. Thank you for Yes, joining. yes, yes. Uh, so, what we were doing yesterday was again marine insurance, and we are going to continue with marine insurance today as well. So, we are going to straight away. Acha, someone has raised a hand. Okay. Uh, I'll share a page with you. Is everyone able to see the page? Yes, sir. We Okay. can see it. Okay. Okay. Fine. Thank you. So, yesterday there were many questions pertaining to different kind of clauses. We discussed some incidental clauses yesterday. We are going to go into institute trade clauses, coal clauses, jute clauses, all ये आज अपन करने वाले. Apart from that, we are going to do duty insurance, increased value insurance. Then we are also going to deal with uh, annual sales turnover policy, annual policies. See, overall, if you marine is a simple topic to understand. If you understand ICC ABC, if you understand ICC ABC, what all is covered, what all is not covered, then you get a very fair idea of what can be covered and what cannot be covered under ITC ABC and other things. So, yesterday there was one question pertaining to termination of contract of carriage clause. So, it is a very simple thing to be explained, but still, uh, there is this slide which I have prepared. See, usually क्या होता है? The insurance is for 1 year. All marine policies are annual policies. They are for 1 year, isn't it? So everyone knows this. So the insurance completes. There are three cases in which the insurance complete या ceases to exist. पहला है policy period खत्म हो गया. On completion of the policy period, say for example, the policy is issued on 1st of January, and so naturally it is going to expire on the 31st of December. So if that particular period of insurance is completed, the policy ceases to exist from 1st of January of the subsequent year. एक ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज क्लॉज का पहला एस्पेक्ट. और it may complete after the goods are unloaded at a port. If it is a seaport, then it shall continue for 60 days after the goods have been unloaded at a seaport, and then it may cease to exist. Case 3, if it is dropped down, if it is unloaded at an airport terminal, then it ceases to exist after 30 days. जो ड्यूरेशन कवर है ना हर एक में, जैसे इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज में ABC में, the duration of cover is 60 days. Once the goods are unloaded at the port, the goods can remain there for 60 days. 60 days तक कवर वैलिड रहेगा. उसके बाद अगर गुड्स को कुछ हुआ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. इफ इट इज एन एयरपोर्ट, देन 30 days. 30 days के बाद कुछ हुआ तो उधर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. इफ इट इज गोइंग बाय रोड and if it is dropped at a terminal, and within 7 days if it is not cleared from that place, our contract ceases. So termination of contract of carriage clause में एक चौथा एस्पेक्ट भी है. ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए, 4 पॉइंट्स बताए मैंने. One is completion of period. Second is once the goods are unloaded at a seaport, cover ceases after 60 days. Okay. Second thing, if the goods are unloaded at an airport, yeah, air terminal, the
cover ceases after 30 days. If at railway sidings or at some depots, तो 7 days. ये चार बोला है. और पांचवा क्या है मालूम है? अगर ये भाई साहब को जाना था बॉम्बे से लेकर, let us assume he was supposed to go to Japan, but instead of Japan, he just simply changed the port and he went to China. और उधर उसने goods unload कर दिया. The moment he docks his ship in China, the moment he turns his flight towards China, there is a termination of contract of carriage clause. क्योंकि हमको उसने बोला है कि वो बॉम्बे से निकलेगा जापान जाएगा. अगर वो ऐसा बोलता, अगर बॉम्बे से निकलेगा जापान जाएगा वाया चाइना, contract is still active. But once he deviates from the actual path, to वो termination of it is breaching of the contract. Now he can do that. He can do that provided he informs the insurer and pays the premium if applicable. If applicable, pays the premium. Now, if applicable क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो. Let us assume that the vehicle, the vessel is leaving Mundra port, which is in Gujarat. It is leaving Mundra port, and it is going to Fujairah, which is a port in the United Arab Emirates. लेकिन वो जो जाने वाला है ना, it is going to go first to Syria. It is going to go to Iran and then come back to Dubai. Fujairah. Just a moment. Okay, at inception of policy or at the time before shipment. Rajkumar Salve, can you please elaborate your question? Let me complete this. If it is suppose ये बॉम्बे से मुंद्रा पोर्ट से फुजैरा पोर्ट जा रहा है, फुजैरा आया यूएई में, बट फुजैरा जाते जाते अचानक उसको ऐसा पता चला कि दिस कार्गो आल्सो हैज टू बी ड्रॉप्ड एट समवेयर इन ईरान. तो वो ईरान के लिए गया और उसने अपने को इन्फॉर्म भी किया कि द शिप इज गोइंग टू गो टू ईरान एंड देन इट इज गोइंग टू कम बैक टू फुजैरा. Extra premium will be charged because if he is going to Iran, he is traveling to the Gulf of Aden. गल्फ ऑफ एडन से जा रहा है तो उधर वॉर रिस्क है, तो वॉर का अपने को प्रीमियम एडिशनल लेना पड़ेगा. Got it? But if he says that I am going from say from Mundra port to Rastanura port. Rastanura is somewhere in Saudi Arabia. लेकिन वो जाते जाते उसको ऐसा लगा कि वो उसको जुएमा पोर्ट भी है एक, उधर भी जाने का, तो वो इन्फॉर्म कर देता है हम लोग को, एंड ही गोज टू जुएमा पोर्ट एंड फ्रॉम देयर ही गोज टू रास्तानुरा. वी विल नॉट चार्ज प्रीमियम फ्रॉम हिम बिकॉज इट इज ऑन द सेम पाथ. इट इज ऑन द सेम पाथ. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस बेसिस के कैसे पता. अभी नाउ आई थिंक मिस्टर साड़वे इज आस्किंग कि ये उसने इंटीमेशन कब देना चाहिए, ड्यूरिंग द इंसेप्शन. नो, इंसेप्शन के टाइम पे पता नहीं रहता है कभी कभी कि ये डिविएशन होने वाला है. वंस द पॉलिसी स्टार्ट्स ही कैन इंटीमेट अस बिफोर द गुड्स आर अनलोडेड एट एनी पोर्ट अदर देन व्हाट इज मेंशन्ड इन द पॉलिसी. If the goods are unloaded at any port other than what is mentioned in the policy, it is termination of contract of carriage. मतलब जिधर उतरने का है, जिधर उन्होंने दिया है हम लोग को लिख के, उधर ही उतरना है. कहीं और उतरोगे तो नहीं चलेगा. It is termination of contract. Okay. Now, I hope this point is clear. इधर मैंने बहुत कम लिखा है, मैंने काफी ज्यादा बोला. 60 days, 30 days, 7 days सब बोला है मैंने. Anyways, coming to institute trade clauses. Now,
इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस जो है ना वो जनरल कार्गो को अप्लाई करता है, बट देयर आर सर्टन कमोडिटीज जिसके लिए अपने को एक सेपरेट इंस्टीट्यूट ट्रेड क्लॉजेस लगते हैं. Now these institute trade clauses have been designed by the same Institute of London underwriters, but they are in agreement with different kind of trade associations worldwide. जितना भी, say for example if it is coal, तो कोल का जितना भी ट्रेड एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर उन्होंने बैठकर ये वर्डिंग्स तैयार किया है. नाउ a few questions are asked from this particular section, but nevertheless we will go through it as अभी अपन कर रहे हैं तो सभी कर देते. So institute trade clauses deal with number of commodities which require special clauses to provide for the particular hazards. The clauses have been drafted by Institute of London underwriters in agreement with concerned trade associations. Okay. जैसे आईसीसी ए बी सी है वैसे ही इंस्टीट्यूट कमोडिटीज ट्रेड क्लॉज या इंस्टीट्यूट ट्रेड क्लॉज ए बी सी भी है, एंड दे आर एग्जैक्टली सेम एज आईसीसी ए, आईसीसी बी, आईसीसी सी. डिडंट आई टेल यू, if you understand ICC A, B, C, everything is smooth. Everything is smooth. Even in engineering insurance, I am deviating a bit. If you have taken miscellaneous, engineering insurance भी एक part है उसमें से. Engineering insurance, if you understand contractors all risk policy, you understand everything. Understand everything. Contractors all risk में जो covered है, covered नहीं है, वो EAR में covered है. जो EAR में covered नहीं है, वो MCE में covered है. It's like that. I mean, if you go through all these policies, you will understand. You have to simply understand contractors all risk policy. वैसे ही इधर ICC ABC याद रखो, सब कुछ आ जाएगा. Now you know what is covered in ABC. C में तो सिर्फ फायर और लाइटनिंग कवर्ड है. B में थोड़ा और कुछ भी कवर्ड है, वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक वगैरह वो सब कवर्ड. A में सब कुछ कवर्ड है एक्सेप्ट वॉर, विलफुल मिसकंडक्ट, इनहेरेंट वाइस, ये सब दिमाग में है आपके. सेम कवरेज अप्लाई ओवर ईयर इन इंस्टीट्यूट ट्रेड क्लॉजेस. ये ट्रेड क्लॉजेस होते किस किस के लिए? देखो, कोको, कॉफी, कॉटन, फैट्स एंड ऑयल्स, हाइड्स, चमड़ी, skins and leathers, metals, oil seeds and sugar, tea. Okay. Now, जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है मैंने इधर सॉर्ट डाउन किए हैं. Institute coal clauses. Okay. The clauses say that the cover is exactly similar to that of ICCB. It is not a wider cover. It is a restricted cover. Fire explosion covered है, general average covered है, general average charges covered है, इरप्शन कवर्ड है, वॉल्केनिक इरप्शन, फिर अपना अर्थक्वेक कवर्ड है, ऑर्डिनरी नहीं सॉरी वॉशिंग ओवरबोर्ड कवर्ड है, ओवरटर्निंग, डिरेलमेंट वगैरह वो सब कवर्ड है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन, रिमेंबर दिस, आईसीसी क्लॉजेस में इनहेरेंट वाइस वाज एन एक्सक्लूजन. यहाँ पे इनहेरेंट वाइस इज कवर्ड. However, in addition, it also covers fire and explosion due to spontaneous combustion. कोल है, उसका स्लो ऑक्सीडेशन होके उसको खुद को आग लग सकता है. It's covered. Fire due to inherent vice is also covered. But have you ever seen people taking this institute coal clauses का कोई clauses है लेते हुए देखा? Because the premium is very high. The premium is extremely high. ये फायर एंड एक्सप्लोजन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबशन अगर हम लोग कवर कर रहे हैं तो अपन नेचुरली प्रीमियम चार्ज करेंगे ना मजबूत. अदरवाइज ले लो आईसीसी ए बी सी या आईसीसी बी ले लो, है कि नहीं? लाइक दैट. सी यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कोल इज ट्रांसपोर्टेड आइदर बाय ट्रेन और बाय सी.
वो कभी रोड से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, either by train or sea, and the chances of it undergoing spontaneous combustion is more by trains than by sea. क्योंकि सी में जब वो ट्रैवल होता है तो वेदर उतना कंड्यूसिव नहीं रहता है फॉर स्लो ऑक्सीडेशन. एंड कंसिडरिंग द मूवमेंट ऑफ कोल अराउंड द वर्ल्ड, most of the coal is moved around by vessels only, not by ट्रेन्स. इसीलिए ये सब दिमाग में रख के उन्होंने स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड इनहेरेंट वॉइस इसमें दिया है. चलो ले लो, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कोल क्लॉजेस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बनता है, लिख लो. इंस्टीट्यूट जूट क्लॉजेस, एवरीवन नोज व्हाट इज जूट, गोन पाट जिसको मराठी में बोलते हैं. आई डोंट नो एनी अदर नेम ऑफ जूट. हिंदी में क्या बोलते हैं, आई रियली डू नॉट नो. एनीवेज, एवरीवन नोज जूट. सो यहाँ पे भी देखो, कवरेज इज सेम एज आईसीसीबी, सेम एज आईसीसीबी, लेकिन इधर कुछ कवर्ड नहीं है. देखो, earthquake, volcanic eruptions and lightning not covered. Cover is attached if the subject matter is jute. ओके. अच्छा, ड्यूरेशन क्लॉज उसमें आईसीसी पॉलिसीज में कितना था, आईसीसी क्लॉजेस में कितना था, 60 डेज था. इधर ड्यूरेशन क्लॉज 30 डेज है. देखो, ड्यूरेशन ऑफ कवर इज रिड्यूस्ड टू 30 डेज, अदरवाइज इट इज 60 डेज इन आईसीसी क्लॉजेस, है कि नहीं. टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज इज रिड्यूस्ड टू 15 डेज. अगर जहाज से उतरेगा तो कितना है, 60 डेज है. ओके. Institute bulk oil clauses. Now, these are attached to usually to tankers which carry crude oil. Different types of crude oil are, yes, just a moment. 7 days, Monica Sahuji, 7 days was when the goods are, moved by road or by rail. 30 days it was for when the goods are moved by air, and 60 days when the goods are moved by vessels. Okay. Now, okay, तो कवर इज, आप उसको आईसीसी एबीसी भी दे सकते हो, जैसे मैं देता हूं. आई गिव आईसीसी एबीसी टू बल्क ऑयल, क्योंकि आई हैव अ क्लाइंट नेम्ड एज एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड, जिसका मिडल ईस्ट से, मेक्सिको से काफी सारा क्रूड ऑयल आता है. एंड every alternate day we get a shipment of around 300, 400, 600 crores shipment उधर से मूव होता है. इफ इट इज मूविंग थ्रू द गल्फ ऑफ एडन तो उसको वॉरेस भी चाहिए रहता है. तो हम लोग ने उसको आईसीसी एबीसी दिया. आईसीसी एबीसी. आई कैन ऑल्सो गिव आईबीओसी. आईबीओसी इज इंस्टीट्यूट बल्क ऑयल क्लॉजेस. नाउ, कवर्स आर आइडेंटिकल, लेकिन एडिशन में देखो क्या हो रहा है, क्या दे रहा हूं. और एडिशन में लीकेज ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट. नाउ, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ट्रांसशिपमेंट? ओके, आई एम गेटिंग एन आंसर. Oil leaked during transit ports. Come on, transshipment. Shifting from one mode to other mode. Exactly. When goods are shifted from one mode to other mode, it is called as transshipment. Shipment और transshipment में यही फर्क है. Okay, let me give you an example. Have you ever heard of something called as the single buoy mooring?
SBM पॉलिसी जिसको बोलते हैं, किसी ने सुना है? सिंगल बॉय मूरिंग या सिंगल पॉइंट मूरिंग उसको बोलते हैं। एक मिनट, ओके, आई टेल यू। सिंगल बॉय मूरिंग मरीन हल में एक पॉलिसी है अपना, न्यू इंडिया का प्रोडक्ट है, सिंगल बॉय मूरिंग पॉलिसी, SBM पॉलिसी, वेर इन व्हाट हैपेंस इज, सी द मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज, वाइजैक में एक रिफाइनरी है लेकिन वो बहुत खस्ता हालत में, HPCL का है रिफाइनरी। देयर इज वन रिफाइनरी इन मुंबई, देयर आर लॉट ऑफ रिफाइनरीज, जामनगर रिलायंस रिफाइनरी इन गुजरात, जामनगर में। देयर इज अ रिफाइनरी इन भटिंडा, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। इनके लिए सबके लिए क्लोजेस्ट पोर्ट इज मुंद्रा, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा से, मुंद्रा का पोर्ट का लोकेशन ऐसा है कि एक अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर जो रहता है ULCC, they cannot dock at Mundra port. They cannot dock at Mundra port. So what they do is they dock somewhere 40 to 50 kilometers inside the sea from Mundra port. और उधर है ना, समुंदर के अंदर है ना, टैंक लगा हुआ है, बॉय बोलते हैं उसको, BUOY। Now hoses are put into this buoy from the ship and oil is transferred there, and then that oil is pumped by another motor and is taken 50 kilometers away to the port. This is called as transshipment, changing of hands. Goods is changing hands, यहां से इधर आ रहा है, वहां से उधर जा रहा है। ये जो प्रोसेस है, मूविंग फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर मोड, इज कॉल्ड एज ट्रांसशिपमेंट। एंड लीकेज होता है उस टाइम पे। सी यूजुअली जब क्रूड ऑयल ऐसा मूव होता है ना, लीकेज नहीं होता है, बिकॉज एक सेकेंड का लीकेज कैन कॉज कॉन्टेमिनेशन ऑफ 100 किलोमीटर्स। एक सेकेंड का लीकेज कैन कॉज, बिकॉज उसमें प्रेशर काफी रहता है, काफी वॉल्यूम निकलता है। एक सेकेंड भी अगर लीक हो गया तो इट विल बी अ ह्यूज एनवायरमेंटल लायबिलिटी क्लेम। ओके, तो वो लोग बहुत उसका ध्यान रखते हैं। This leakage during transshipment is also covered, remember. So I will not give you IBOC, definitely I'll give you ICCA। अच्छा, आगे देखो, लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस, ये भी कवर करता हूँ। नेग्लिजेंस, कॉन्टेमिनेशन, वो भी कवर कर रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग IBOC आई यूजुअली गिव ICCA। इसमें ये सब कवर्ड नहीं है कि नहीं? एक्सक्लूजन्स सेम एज ICC एक्सेप्ट द वन रिलेटेड टू पैकिंग, क्योंकि पैकिंग और इसका क्या संबंध है, ऑयल का क्या संबंध है? पैकिंग ऐसा थोड़ी, ऑयल ऐसा छोटा छोटा बैरल्स में आता है, नहीं, ऑयल तो टैंकर में आता है। ड्यूरेशन ऑफ कवर अगेन इज 30 days, ICCA में कितना है? 60 days। तो कोई क्यों लेगा ये IBOC? ICC ले लो। आगे, these are very boring policies। कॉफी, अभी पहले है ना, बहुत पहले जब मरीन मतलब आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, जेनेसिस का जमाना, जेनेसिस का जमाना इज प्रायर टू 2007 देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड एज जेनेसिस। तब एक हमारे इधर प्रोडक्ट हुआ करता था व्हिच वाज कॉल्ड एज कॉफी पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, जस्ट अ मोमेंट, देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, सो एक मिनट, what is the extent of leakage which is covered in IBOC as normal leakage and wear and tear is not covered?
यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरिएंट नॉर्मल कौन डिसाइड करता है मालूम है? सर्वेयर डिसाइड करता है कि ये नॉर्मल लीकेज है या नॉर्मल wear and tear. See, ultimately, the uh, surveyor is the eyes of the insurer. वो जैसा सर्वेयर हमको रिपोर्ट देता है, if he says that it is normal, then it is normal. If he proves to us that this is beyond normal, then we have to pay the claim. ऐसा है. So it depends on the surveyor, and usually remember this that ये जो है इन सब क्लेम्स के लिए हम लोग छोटा मोटा सर्वेयर को नहीं भेजते, क्लास ए सर्वेयर को ही भेजते हैं, क्लास ए इन मरीन. जैसे कि मैंने गवारी कर बोला, प्रोटोकॉल सर्विस, ये लोग प्रॉपरली हमको बता देते हैं कि ये नॉर्मल है कि थोड़ा बियॉन्ड नॉर्मल है. सो देयर इज नो सच लिमिट एज सच. ओके, इट इज द थ्रू द आईज ऑफ द सर्वेयर. यस, क्लाइंट्स इंसिस्ट ऑन आईबीओसी, आई नो दैट, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को आईसीसी के लिए पटा लिया है. ओके. नाउ कॉफी पॉलिसीज. So initially it was a package insurance policy, एक coffee package insurance policy आता था. Now this has been broken into 4 different policies: type 1 policy, type 2, type 3, type 4. जिसको जो चाहिए वो ले सकता है. या इधर है ना, क्या होता है मालूम है? The people who are handling the goods, the people who are handling the coffee, they change. As a result of which, once there is a change, अपना लाइबिलिटी खत्म हो गया, दूसरे का लाइबिलिटी चालू हो गया, तो उसको लेने दो इंश्योरेंस. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. नाउ फुल पैकेज पॉलिसी इज व्हाट यू नो, प्लकिंग द कॉफी, टेकिंग इट टू द क्यूरिंग हाउस, क्यूरिंग हाउस में उसको प्रोसेस करके, ड्राई करके, उसको पैक करके, उसको जहाज तक लेके जाना, जहाज में रखना, जहाज से लेकर उसको सेलर के बायर के पास भेजना. ये फुल पैकेज पॉलिसी था. Now this was possible for only those coffee houses like Nescafe, extremely huge. वो सब काम खुद ही करता है, सब काम खुद ही करता है. फ्रॉम उसका फार्म भी खुद का है, नेस्कैफे का खुद का फार्म है कॉफी का. प्लकिंग करता है वो उसके एम्प्लॉई. उधर से वो लेके किधर जाते हैं? नेस्कैफे क्यूरिंग हाउस. नेस्कैफे क्यूरिंग हाउस से जाता है वो जहाज पे. जहाज उसका नहीं रहता है सिर्फ, और जहाज से लेकर सप्लायर तक या बायर तक वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कर देता है. दैट वाज कॉल्ड एज फुल पैकेज पॉलिसी, एंड दैट हैज ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ 120 डेज. ड्यूरेशन ऑफ कवर जिसको अपन बोलते हैं, 120 डेज. रिमेंबर दिस. सरप्राइजिंग ना. अभी छोटा कॉफी हाउस लेते, कोई छोटा कॉफी वाला, वो क्या करता है? वो फुल पैकेज पॉलिसी नहीं लेता है. उसको पता है उसका काम क्या है मालूम है? उसका काम है प्लकिंग एंड सेंडिंग इट टू द क्यूरिंग हाउस. क्यूरिंग हाउस किसी दूसरे का है, तो वो ये पॉलिसी लेता है, टाइप 2 का पॉलिसी कवरिंग प्लकिंग एंड ट्रांजिट टू द क्यूरिंग हाउस. वो क्यूरिंग हाउस के बाहर 60 डेज तक स्टोर कर सकता है उसको. इट इज कवर्ड अंडर आवर ट्रीटी. आगे एक मिनट, इधर कुछ आया है. ट्रांजिट फ्रॉम क्यूरिंग. अभी क्यूरिंग हाउस में गया, क्यूरिंग हाउस कोई दूसरे बंदे का नाम XYZ है कोई. क्यूरिंग हाउस क्या करेगा? क्यूरिंग हाउस उसको पैक करे, उसको प्रोसेस करेगा, पैक करेगा, एंड ही विल टेक दैट टू द FOB पॉइंट. FOB पॉइंट मतलब वेसल तक लेके जाएगा. he will keep it there. His liability ceases over there. अभी कुछ कुछ लोग रहते हैं वो क्यूरिंग हाउस से सेलर के घर तक कवर देते हैं, उसको टाइप 4 पॉलिसी बोलते हैं. ये दोनों भी केसेस में द ड्यूरेशन ऑफ कवर इज 60 days. You have to remember this duration of cover, yeah, storage days, and this cannot be extended under any circumstances because it breaches our treaty. Okay.
जो ड्यूरेशन ऑफ कवर है या फिर स्टोरेज का जो ये है वो अपन ब्रीच नहीं कर सकते. ओके, our reinsurance program is very strong, but still we cannot breach this. Okay, I have seen a policy from Hong Kong जिधर 60 days का जो स्टोरेज था, ड्यूरेशन ऑफ कवर अंडर ICCA, उन्होंने 60 डेज का 90 डेज करके लिया था बिकॉज देयर reinsurers agreed to it. I don't know how, कैसे किया पता नहीं. Anyways, is this clear? Full package policy, फिर plucking to curing house, फिर curing house to FOB point, ये तीसरे टाइप का पॉलिसी है. एंड चौथे टाइप का पॉलिसी है क्यूरिंग हाउस टू द सेलर्स वेयर हाउस या सॉरी बायर्स वेयर हाउस. ये है 4 टाइप का कॉफी पॉलिसी. अभी इधर देखो, व्हाट इज द रिस्क कवर्ड. आप बोलेंगे सर इधर लेकिन ट्रांजिट आता है. हाँ, ट्रांजिट ही है ना. प्लकिंग करने के बाद the goods are transported to the curing house. This is transit. Yes, just a moment. Pooja Chaudhary, she has raised her hand. Yes, Pooja ji, कहिए. Yes, Pooja. Case 3. If it is dropped down, yeah. If it is unloaded. Hello. Hello. I cannot hear you. Hello? Yes. Sir, it has been done by mistake. Okay. Okay. So where was I? Yes. Risk covered is same as ITC in inland transit clauses, which were devised by this tariff advisory committee. SRCC cannot be covered. It can be covered by additional premium. Now everyone knows what is SRCC. It is strikes, riots, and civil commotion. Remember this. ITC clauses में war covered नहीं है. Even if you want to pay extra premium, war covered नहीं है. Inland transit clauses are only for shipments or transshipments or motion or transit within India. And as of now, there is no war-like situation in India. तो war का cover है ही नहीं. कल को अगर war-like situation हो गया, तो insurers might add this war and SRCC in. अगर हो गया war-like situation तो. See, there was no cover for COVID earlier. है कि नहीं? प्राइवेट अपने लिए था. एज एम्प्लॉइज वी वर कवर्ड, बट जिनको हम लोग सेल करते उनके लिए पैंडेमिक वाज नॉट कवर्ड. दे हैड टू टेक एडिशनल, कुछ ने तो एडिशनल प्रीमियम लेके बाहर वालों ने, टाटाज एंड दे सोल्ड अ लॉट ऑफ पॉलिसीज फॉर कोविड. केस टू केस बेसिस. जैसे अभी इंडिया में वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है, तो वी ओनली प्रोवाइड SRCC. कल को अगर हो गया तो दे मे इंट्रोड्यूस जस्ट वॉर एंड SRCC अलॉन्ग विद ITC. अदरवाइज ITC क्लॉसेस के साथ, इनलैंड ट्रांजिट क्लॉसेस के साथ वॉर अटैच नहीं होता है, सिर्फ SRCC होता है. स्ट्राइक्स, राइट्स एंड सिविल कमोशन. इफ देयर इज लॉस, मार्केट वैल्यू बेसिस पे क्लेम सेटल हो जाता है. ओके, कॉफी पॉलिसी में the claim is settled on market value basis. And look at this, duration of cover कितना है? 120 days for type 1 policy. मतलब full package policy है उसको 120 days. और बाकी का जो 3 पॉलिसी है, type 2, type 3, type 4, मतलब
plucking to curing house to FOB point, and curing house to buyer's place. उसको 60-60-60 दिन का. ओके, MCQ इधर बनता है. कार्डमम एस्टेट्स, पॉलिसी फॉर कार्डमम एस्टेट्स. इधर भी उन्होंने तीन टाइप का पॉलिसी है. फुल पैकेज पॉलिसी, दूसरा है प्लकिंग टू द हाउस, जहां पे ऑक्शन होने वाला है या फिर जहां पे उसको ड्राई किया जाने वाला है. सी, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन रॉ कार्डमम. रॉ कार्डमम ऑलिव के जैसे दिखता है, बड़ा रहता है थोड़ा सा. उसको ड्राई करने के बाद वो एकदम सिकुड़ जाता है, जो अपन देखते हैं. कार्डमम इज इलायची, एवरीवन नोस. सो एक पॉलिसी है जो सिर्फ पिकिंग करके उसको ओनर तक या फिर ऑक्शनर जो रहता है उसके दुकान तक उसको ले जाने तक का ट्रांजिट. दैट इज टाइप 2 पॉलिसी. एंड टाइप 3 इज ट्रांजिट पॉलिसी, कहीं से भी कहीं पे लेके जाओ. दैट कैन बी गिवन. नाउ 90 डेज का स्टोरेज है इन टाइप 2 पॉलिसीज, एंड फुल पैकेज पॉलिसी इज सेम एज दैट ऑफ कॉफी, 120 दिन. Now, what is the risk covered? Same as coffee policy, मतलब ITCA. ओके, अभी बेसिस ऑफ सेटलमेंट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है. बेसिस ऑफ सेटलमेंट इज रॉ कार्डेमम इज टू ड्राई कार्डेमम इज 4:1. मतलब इसका ये कि जब 4 किलो रॉ कार्डेमम, कच्चा इलायची जब 4 किलो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब आपको 1 kg ऑफ ड्राई इलायची जो अपन मार्केट से खरीदते उसका पेमेंट मिलेगा. अभी आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये तो नाइंसाफी है. ड्राई कार्डेमम ही खाते हैं हम लोग, रॉ कार्डेमम हम लोग नहीं खाते. उसका प्राइस कम रहता है, ड्राई कार्डेमम का ज्यादा रहता है. दैट इज व्हाई दिस रेशियो ऑफ 4:1 इज केप्ट. ओके, just a moment. Rubber estate. Package policy for rubber estates. We रबर एस्टेट के लिए 3 पॉलिसी है, जैसे पहले भी था, अभी कार्डेमम में भी था वही. फुल पैकेज पॉलिसी जिसमें स्टोरेज 120 डेज का है. दूसरा है फुल पैकेज पॉलिसी अप टू एफएबी पॉइंट, शिप तक लेके जाने का, उसको भी स्टोरेज 120 डेज. एंड तीसरा है ट्रांजिट लॉस या ट्रांजिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रीफ्यूज्ड लैटेक्स. सेंट्रीफ्यूज्ड लैटेक्स मतलब रबर जब बनता है वो बहुत हार्ड रहता है, and there is a centrifuge, there is a machine which is called as centrifuge. It is attached to a motor and it has blades that go circular, ऐसा circular spiral में जाता है ऊपर से नीचे तक. And these motors, they vigorously rotate this particular thing. This, when it rotates, ये जो hard rubber रहता है उसको पूरा mix कर करके जैसे हम लोग दही फेंटते हैं, द प्रोसेस ऑफ वो दही फेंटना या ऑमलेट फेंटना, उसको सेंट्रीफ्यूजिंग बोलते हैं. वो सेंट्रीफ्यूजिंग जब मैकेनिकली होता है रबर का, तो रबर बहुत पतला हो जाता है, उसको लैटेक्स बोलते हैं. And a lot of things can be prepared using this centrifuge latex. Okay, इसका ट्रांजिट पॉलिसी रहता है. रिस्क अगेन इज ITCA, ड्यूरेशन ऑफ कवर इज 120, and basis of settlement of claim is market value basis. Simple है. Coffee, tea, rubber, jute, it is very simple to. अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कुछ. Can the policy be extended if the process of production to delivery takes more than 120 days? Policy can be extended at additional premium. Okay. चाय. Now this ये
कभी कभी पॉलिसी है ना टी क्रॉप इंश्योरेंस का फैक्ट्री वाइज दिया जाता है, कभी कभी गार्डन वाइज दिया जाता है। ये मेरा गार्डन है तो इस गार्डन का एक टी क्रॉप इंश्योरेंस बनेगा, ये मेरा फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री का एक इंश्योरेंस बनेगा, ऐसा। तो कवरेज इज इनलैंड ट्रांजिट सब्जेक्ट टू इनलैंड ट्रांजिट रेल रोड ITC ए। इनलैंड ट्रांजिट वेसल से अगर जा रहा है तो इनलैंड वेसल्स का क्लॉज लगेगा। ओवरसीज शिपमेंट के लिए ICC ए लगेगा, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉजेस लगेंगे एयर के, अगर एयर से जा रहा है ICC ए एयर। एक्सक्लूजन इज लॉस ड्यू टू एब्सेंस और शॉर्टेज, फॉल्ट, नेग्लिजेंस, ट्रेड लॉस, होल्ड अप। किसी कारणवश अगर वो चाय पत्ती पोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम वियर्ड सर्कमस्टेंसेस, ट्रांसपोर्ट है लेकिन पहुंच नहीं पाए, दैट इज नॉट कवर्ड। ट्रांसपोर्ट है तो पहुंचना चाहिए। किसी ने गुड्स छोड़े नहीं उधर से, डिस्पाइट देयर वाज एन इनवॉइस, देयर वाज एवरीथिंग, मतलब लीगल डॉक्यूमेंटेशन था, लेकिन फिर भी किसी ने होल्ड अप करके रखा गुड्स को, इट इज नॉट कवर्ड, क्योंकि इट मे गो बैड, तो इट इज नॉट कवर्ड। दूसरी बात, स्टैंडिंग क्रॉप्स रहते हैं ना, स्टैंडिंग क्रॉप्स, उस वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, कवर्ड नहीं है एक्सेप्ट फॉर हेल। हेल एवरीवन नोस, क्या बोलते हैं यार इसको हिंदी में, आई डोंट नो, इन मराठी इट इज कॉल्ड गारपीट। हेल स्टॉक, हेल ऐसा बर्फ का टुकड़ा गिरता है ना नीचे, उस, ओके समथिंग कमिंग, हाँ ओले, यस ओले, ओले, थैंक यू मोनिका जी। ओले जो गिरते हैं उसके वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ स्टैंडिंग टी क्रॉप्स, that is only covered at additional premium and that too 50% is only covered। अपना हमारा लायबिलिटी सिर्फ 50% रहेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि टी जरा जिधर ठंडा होता है उधर ही आता है, और जिधर ठंडा होता है उधर ही तो ओले आते हैं, है कि नहीं? इसीलिए liability is limited to 50% for destruction of standing crop, not of plucked tea leaves, standing crop, स्टैंडिंग क्रॉप का डिस्ट्रक्शन ड्यू टू हेल स्टॉर्म्स, लायबिलिटी इज 50%, लेकिन उसके लिए एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है, याद रखना, इट इज नॉट स्ट्रेट अवे कवर्ड। ओके, सो increased value insurance, what is this increased value insurance? So let us assume गुड्स निकले हैं 1st of January 2021 एंड गुड्स निकले हैं जापान से, इधर आ रहे हैं, एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ द सेम गुड्स ऑन 1st of January was 100 rupees, let us assume, और वो इधर आते 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 मार्च महीना आ गया, और मार्च महीने में वो गुड्स का प्राइस हो गया है 150। 31 मार्च को इधर आया, 31st March they reached Mumbai port and the price is now 150 rupees. The price has increased, the market conditions have changed over the period of 3 months, and जो चीज 100 रुपए की थी वो आज 150 रुपए की है। तो ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू है ना, उसका जो डिफरेंस है उसका इंश्योरेंस अपन इधर लेते। नाउ लुक, insurance of increased cost at destination due to market conditions on the date of landing. Increased sum insured cannot exceed 100%, याद रखो। मतलब अगर उसका CIF वैल्यू है 100 रुपए, तो वो इंक्रीज्ड वैल्यू इंश्योरेंस 100 रुपीज से ज्यादा नहीं ले सकता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 100% ऑफ द CIF सम इंश्योर्ड, CIF सम इंश्योर्ड मतलब उसका एक्चुअल जो कार्गो ICC ए या ITC ए में जो उसने कवर किया है, ITC में नहीं सॉरी ICC में ही कवर करेगा, क्योंकि 3 महीना विद इन इंडिया कभी लगता नहीं है एक चीज इधर से इधर आने के लिए।
तो समझो ICCA में उसका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपया, तो he can take an increased value insurance of 5 lakhs rupees only extra, not more than that. I hope you are understanding it. It is not a valued policy, and insurance cannot exceed the difference between present day market value and value of the goods on the date of arrival. Okay, अगर let us take a flip side, 5 लाख रुपए का गुड्स है उसका, जापान से मुंबई आ रहा है 5 लाख रुपए का गुड्स, एंड ही हैज फोरसीन इट कि शायद प्राइस डबल हो जाएगा, उसने 5 लाख रुपए का एक एडिशनल इंक्रीज्ड वैल्यू इंश्योरेंस भी ले लिया, बट बाय द टाइम द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन, instead of becoming 10 lakhs they have become 11 lakhs. Our liability shall be limited to that increased 5 lakhs only. I hope you are understanding this. Okay, तो ये इंक्रीज्ड वैल्यू का ही इधर पेमेंट हो जाएगा, कार्गो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तुम्हारा, कार्गो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ वैल्यू बढ़ गया उसका, तो इंक्रीज्ड वैल्यू का अपन इधर ये कर रहे हैं. नाउ द रेट चार्ज्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो CIF पे रेट चार्ज किया जाता है वही इंक्रीज्ड वैल्यू पे लगाते हैं, लेकिन ब्रोकर्स ऑलवेज इंसिस्ट ऑन अ रेट लेसर देन दैट ऑफ कार्गो इंश्योरेंस. मतलब जो ICCA के लिए जो मैंने रेट लगाया है उतना ही रेट तुमको इंक्रीज्ड वैल्यू के लिए लगाने का है, लेकिन ब्रोकर कभी वो नहीं बोलता है. ब्रोकर बोलता है अरे सर आपने इधर इतना प्रीमियम ले लिया ना, तो इधर थोड़ा कम कर दो ना. Okay, that is why New India is not making underwriting profits. We are only living on investment profits. Okay. Special storage risks. These are usually for road transits जो होता है या रेल ट्रांजिट्स जो होता है, उसके लिए SSRI बोलते हैं उसको, सुशांत सिंह राजपूत इंश्योरेंस बोलता हूँ मैं उसको. स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी takes into consideration the requirements of the consignor of goods for insurance to protect his goods during storage at destination railway yard or carrier's premises, pending clearance by the consignees on termination of cover under an open policy. ये जो कवरेज है वो एग्जैक्टली ओपन पॉलिसी जैसा रहता है, मतलब, लेकिन इधर बेसिकली हो क्या रहा है मैं बताता हूँ. रेलवे से माल आया, रेलवे के यार्ड में गिर गया. रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड्स रहता है, यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ यार्ड्स आउटसाइड रेलवे स्टेशंस, नॉट इन लोकल स्टेशंस, लेकिन जो आउट स्टेशन का जो ये रहता है, बॉम्बे सेंट्रल में भी एक यार्ड है विच ऑलमोस्ट टचेस ग्रैंड रोड. तो वो जो यार्ड है ना, इधर काफी सारा सामान पड़ा हुआ रहता है, ये सामान उधर स्टोर किया जाता है इन द प्रीमाइसेस ऑफ रेलवे, इन द प्रीमाइसेस ऑफ रेलवे उधर वो स्टोर किया जाता है अप टू 7 डेज, अप टू 7 डेज. 7 दिन के अंदर वो सामान उधर से हिल के उसके डेस्टिनी तक नहीं गया, अपना जिम्मेदारी खत्म, अपना जिम्मेदारी खत्म. लेकिन यूजुअली यू विल सी दैट यार्ड में क्या पड़ा रहता है मालूम है? सीमेंट. यार्ड में ज्यादा से ज्यादा पड़ा रहता है सीमेंट. यू विल सी ऑलवेज सीमेंट या फिर जिप्सम, ऐसा कुछ पड़ा रहता है यार्ड में, क्योंकि वो काफी बल्क में आता है. ओके, जब कोल ट्रैवल होता है, वो कोल सीधा ट्रेन लेके उसके डेस्टिनी तक जाता है. ओके, वो प्रोविजन रहता है. लेकिन स्टोरेज रिस्क में, जहाँ पे छोटा मोटा सामान यहाँ से वहां लेके जाने का ट्रेन से, if it is stored in the railway yard, it cannot be stored there for more than 7 days. Okay? अभी जरूरी नहीं कि 7 दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, नहीं. सीमेंट है, 7 दिन रहा क्या या 7 महीने रहा क्या, खराब नहीं होएगा.
जब तक वो गीला नहीं होता है। बट इसीलिए आप देखेंगे कि रेलवे यार्ड में सीमेंट का गोनी ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है, उसको कोई उठाने ही नहीं आ रहा है। देयर आर न्यूमरस रीजंस टू इट। ओके, it is basically an open policy, and what is open policy I have already told you. Monthly declarations आ जाते हैं and so on so forth. Annual policy, someone was asking me an annual policy. It is any other policy, for that matter, any open policy. छोटा सा माइनर ये है इसमें एक एनुअल पॉलिसी ऑफ विच मतलब 12 महीने का पीरियड रहता है, इज इशूड फॉर गुड्स बिलोंगिंग टू द इंश्योर्ड or held in trust by the insured, not under contract of sale or purchase. समझ में आया? ये क्या है? ये सर ये क्या है, मेरे को पता नहीं चला। पता तो ये SSRI था ना, उसने गुड्स कहाँ रखे थे? गुड्स कहाँ रखे थे? रेलवे के कंपाउंड में, रेलवे के यार्ड में। वैसे ही समझो, आप अपना गुड्स लेके गए एंड यू केप्ट इट इन अ वेयर हाउस। यू केप्ट इट इन अ वेयर हाउस, एंड वो वेयर हाउस से अभी वो ट्रांसपोर्ट होके जाएगा उसके डेस्टिनी तक। तो दिस वेयर हाउस ओनर is having your goods in custody for a few days, but he has no interest in those goods. There is no contract of sale, there is no contract of trade between you and him. You are just paying him the rent of the occupation of the warehouse. इसका काम क्या है? इसको जल्दी से जल्दी इधर से हटा के उसको डेस्टिनी तक पहुंचाना। एनुअल पॉलिसी वो लोग लेते हैं। ओके, simple, extremely simple. Now, I would, I'm taking a break of 5 minutes. Just a moment. I have some important work to do. एक 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। 5 मिनट। Okay. Give me just 5 minutes.
Hello. Yes, I'm back. So, duty insurance. We were talking about duty insurance. कभी कभी होता क्या है, let us take an example of iPhone. There are only two countries, three in fact, I'm sorry. There are only three countries where you will get iPhone at very cheap rates: China, जापान एंड यूएस. तीन कंट्री. अभी आप बोलेंगे सर दुबई में भी मिलता है, लेकिन वो आईफोन नहीं रहता है, वो कुछ दूसरा ही रहता है. सो चाइना, जापान एंड यूएस, इधर आईफोन बहुत सस्ता मिलता है. ओके, जस्ट अ मोमेंट. जस्ट अ मोमेंट. ओके, फाइन. सो हाँ, इधर कुछ पूछा है किसी ने. इन एसआरसीसी पॉलिसी, if goods coming from rail only, already provision 7 days cover, so why separate policy? एसआरसीसी का सेपरेट पॉलिसी किधर रहता है? मैं किधर बोला? एसआरसीसी का एडिशनल कवर दे सकते हैं इन कंजंक्शन विद आईटीसीए. सेपरेट एसआरसीसी का पॉलिसी नहीं रहेगा. व्हाट आई प्रोवाइड टू एचएमएल या एचपीसीएल इज सेपरेट वॉर पॉलिसी. ओके, so coming back. So iPhone, I was talking about iPhone. Reason behind that is the customs duty, which is applied at the destination port. Let us assume India. यूएस से आईफोन आ रहा है पैक्ड, इंडिया आ रहा है. इंडिया आने के बाद एप्पल has decided to levy a certain amount of certain एक अमाउंट उसने फिक्स कर दिया है, उसका एक इनवॉइस कॉस्ट फिक्स कर दिया है. Accordingly, it is taxed by the custom officials. तो ये 60-70 हजार, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए का फोन हो जाता है. I simply cannot believe a phone can come for 1 lakh rupees. Anyways, this increased value due to customs duty imposed can be covered under duty insurance. Now be aware of this. Duty insurance and increased value insurance are separate things. Increased value insurance कब दिया जाता है? जब the value of the goods has increased in the market because of the market conditions. Duty insurance is issued only when the goods value increases because of the duty which is levied on it. Customs duty जो लगता है उसके ऊपर, उसके वजह से उसका कॉस्ट बढ़ गया है, लैंडिंग कॉस्ट बढ़ गया है, उसके लिए अपन ड्यूटी इंश्योरेंस देते हैं. ओके, नाउ सी, claims are payable on the basis of actual duty paid or on the basis of sum insured, whichever is less. Okay, it is not a valued policy. Rate charged is 75%. Increased value में क्या था? जितना सीआईएफ में रेट चार्ज किया है, मतलब जितना अपन एक्चुअल कार्गो पॉलिसी में रेट चार्ज किया है, उतना ही इंक्रीज वैल्यू इंश्योरेंस में चार्ज करने का. ड्यूटी इंश्योरेंस में वैसा नहीं है. जितना अपन समझो 1 रुपया चार्ज किया है और in the cargo policy, in duty insurance we have to charge 75%. So 75% of the premium rate is charged for the CIF value of cargo insurance. This is MCQ. यहाँ पे MCQs बनते हैं, उधर 100%, इधर 75%. दूसरी बात, ये ड्यूटी इंश्योरेंस
में अगर ड्यूटी, देखो ड्यूटी तो भरना पड़ेगा, ड्यूटी तो भरना ही पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन ये ड्यूटी कैन बी रिकवर्ड, कैन बी रिकवर्ड। नाउ अभी आप बोलेंगे सर ड्यूटी तो उसको भरने का है, तो उसका इंश्योरेंस कैसे होएगा, है ना? एक थ्रेशोल्ड है, ये एक जो अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस है या फिर मशीनरी प्राइस इंडेक्सेस है, इनमें हर एक चीज का ड्यूटी फिक्स्ड है। इफ द ड्यूटी एक्सीड्स दिस, then it comes under duty insurance. Remember that. So claim should be lodged before completion of 6 months for recovery of this paid duty. Okay, so duty insurance is because of increase in the cost because of the increased custom duty, and increased value insurance is because of increase of the cost of the goods in the market due to market conditions. There is a difference between them. Remember that. उधर 100% है, rate charge is 100% which is charged in CIF. यहाँ पे 75% which is charged in CIF. Okay. Now I think we have covered a lot of policies. There is one more policy I would like to tell you. वो है मल्टी ट्रांजिट पॉलिसी. ओके, मल्टी ट्रांजिट पॉलिसी में क्या होता है, जैसे एनुअल पॉलिसी, ए का गुड्स बी के घर पे रखा है, बी का उससे कोई संबंध नहीं है, बी का काम यही है कि वो गुड्स पैक करके तुरंत सी के पास भेज दे, है कि नहीं? मल्टी ट्रांजिट पॉलिसी कभी कभी क्या होता है मैं बताता हूँ. गुड्स आर कमिंग बाय शिप, गुड्स आर अनलोडेड, दे रिमेन इन द पोर्ट एट फॉर 30 days. पोर्ट का और वो गुड्स का कोई संबंध है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं. पोर्ट का काम क्या है, तुरंत इसको पैक करके भेज दो. चलो, उसने पैक करके भेज दिया, वो गया इंटरस्टेट बस टर्मिनल पे, ISBT, इंटरस्टेट बस टर्मिनल पे गया वो गुड्स. अभी इंटरस्टेट बस टर्मिनल पे गया, उधर 4-5 दिन रुका, उधर बस आया एक, उसने गुड्स लोड किया अपने बस में और वो लेके गया, उसने रखा उसको फाइनली गोडाउन में. तो गुड्स हैव चेंज्ड हैंड्स मल्टीपल टाइम्स. लुक हाउ शिप से उतरते वक्त लोडिंग अनलोडिंग हुआ, फिर उधर स्टोरेज हुआ है, फिर उधर से गुड्स ISBT तक गया है किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, मे बी बाय बस ओनली, मे बी बाय रोड. ISBT के इधर वो 4-5 दिन रुका, उधर फिर ISBT के लोगों ने उसको बस में चढ़ाया, लोड किया, फिर ISBT वाला उधर से लेके गया और फिर दूसरे स्टेट में उसको जिधर उसको रखना है वो रख दिया. Goods have changed hands multiple times. इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ट्रांजिट पॉलिसी. मल्टी ट्रांस, वी कवर एवरीथिंग, लेकिन इसका प्रीमियम थोड़ा हाई रहता है बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इज हाई. नाउ मल्टी ट्रांजिट पॉलिसी इज नॉट गिवन टू पेरिशेबल गुड्स. रिमेंबर, कैन यू गिव इट? विल यू टेक द रिस्क to give multi-transit policy to perishable goods? You are very good underwriters then. Okay, मतलब तुम्हारे जैसा अंडरराइटर फिर हर एक ब्रोकर और हर एक क्लाइंट को मिलना चाहिए. You don't issue multi-transit policies for perishable goods because storage है उधर, स्टोरेज है, स्टोरेज भी हम लोगों ने लिमिट कर दिया है, बट नेवर इशू फॉर perishable cargoes. Okay, this is multi-transit policy. Then the policy which I was talking about is this sales turnover. Now it's a very huge policy, but just discussing that policy over here is not going to make any point because nobody is going to ask you the minute itsy bitsy pieces and nuances, minute nuances. एक मिनट, मेरे को कोई क्वेश्चन आ रहा है. Ship repair yard like MDL, CSL, GSL, GRSE takes which insurance policy? They are called as ship repairers liability insurance. Okay,
शिप रिपेयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस वो हल में अपन कवर करेंगे, लेकिन आज हल नहीं हो पाएगा. एंड आई हैव टेकन परमिशन टू एक्सटेंड दिस लेक्चर फॉर टुमारो एज वेल. सो वी विल बी डूइंग एंटायर हल इंश्योरेंस टुमारो. ओके, तो ये शिप रिपेयर्स लायबिलिटी लेता है. जस्ट अभी है, अभी उस ये भाई साहब ने पूछा है गैलेक्सी M31 ने, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको. व्हाट हैपेंस इज when a ship comes to the to Mazgaon dock for repairs, तो वो शिप को ड्राई डॉक में लगा देते हैं. ड्राई डॉक में लगाने के बाद वो पानी पूरा उसको पंप आउट कर देते हैं, फिर नीचे जाके रिपेयरिंग चालू हो जाता है. Now, if during this repairing the vessel faces some loss or damage, तो वो लायबिलिटी, अभी वो गुड्स किसके ट्रस्ट में, वो वेसल किसके ट्रस्ट में, माझगांव के ट्रस्ट में. And who is responsible for that loss? Mazgaon dock. So they will take the ship repairer's liability. Okay. Similarly, if I am a person who is sitting somewhere in Marshall Islands और मैंने Mazgaon dock को बोला कि मेरे को एक कंटेनर शिप बना के चाहिए, I will transfer you the money. Now, right from laying the keel of the vessel to making its test runs up to some nautical miles in the ocean, Mazgaon dock takes an insurance which is called as builder's risk insurance, ship builder's risk insurance. While the building of the ship, if something goes wrong, if there is a mishap, there is a liability. So in order to take care of that, there is ship builder's insurance. समटाइम्स होता क्या है कि वेसल अपना सब खत्म हो गया है, वेसल का काम धंधा, अभी वेसल को तोड़ने भेजना है. ओके, शिप ब्रेकिंग यार्ड में भेजने का है. शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है इधर, दारू खाना करके एक जगह है मस्जिद बंदर के वो साइड पे, उधर शिप ब्रेकिंग यार्ड है. उधर शिप ब्रेकिंग यार्ड में जब लेके जाते हैं तो वो शिप ब्रेकर्स लायबिलिटी रहता है, उसका शिप ब्रेकिंग इंश्योरेंस रहता है. वहां पे उसको इंजन एकदम ऐसे निकालना है जैसे एकदम फुल प्लग करते हैं हम लोग, बाकी सबको तोड़ देने का. तो इफ at all if there is any damage to the engine, if there is any damage to any vital component which is required by the owner, तो वो शिप ब्रेकिंग इंश्योर जो है, शिप ब्रेकिंग इंश्योरेंस जो लेता है वो उसके पॉलिसी में से पे करता है. Okay, I had a query regarding insuring cashew of an insured where the goods are purchased from the wholesaler, sent to the processing house, and at the end it reaches with the insured in this godown. Now, how the policy to be issued? Acha. According to me, see, the goods are going to be there at this processing plant for more than 7 days. So it is advisable to take two different policies. From A place to B place, let that policy end over there, and then take it from B to A, B to C. अदरवाइज ये जो स्टोरेज अगर हम लोग ट्राई करने जाएंगे, इधर कवर करने जाएंगे, इफ इट एक्सीड्स मोर देन 7 days, देन you cannot give it a multi-transit policy because the goods are not held in trust, they are undergoing process. Remember this, they are undergoing process, so they cannot be covered under marine policy. So let there be two insurances from A place to B place. Let there be insurance for he will be definitely having insurance for processing, उसका प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कुछ इंश्योरेंस रहेगा, एंड लेट देयर बी अ डिफरेंट इंश्योरेंस फॉर दिस प्रोसेसिंग प्लांट टू द बायर, टू द इंश्योर्ड गो डाउन व्हाटएवर दिस. गॉट इट? आगे सो basis of transit is not the value of the goods but the sales turnover. मतलब एक साल में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा कितना सेल्स होएगा, वो उसका सम इंश्योर्ड रहता है बेसिकली.
कुछ पॉलिसीज का सम इंश्योर्ड, लाइक द वन विच इज आई एम हैंडलिंग राइट नाउ, इज 24,000 crores. ओके, और इसका प्रीमियम भाई साहब ने एक शॉट में दिया है, सिंगल प्रीमियम, बिकॉज देयर इज नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इन मरीन, नहीं कि नहीं? इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन हल, नॉट इन मरीन. ओके, हालांकि हम लोग दे सकते हैं, बिकॉज 24,000 करोड़ का जो इंश्योरेंस करता है वो प्रीमियम उतना देगा, तो उसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट तो हम बना के दे सकते हैं. इन बुक्स यू कैन नॉट, इन प्रिंसिपली यू कैन नॉट, एक्चुअली यू कैन. ओके, सो देयर इज नो नीड टू मेक पीरियोडिक डिक्लेरेशंस. मैंने बोला था ये बहुत डेंजरस पॉलिसी है, एंड दिस शुड बी ओनली गिवन टू प्राइज्ड क्लाइंट्स, क्योंकि इधर डिक्लेरेशन नहीं करेगा ना तो भी चलेगा. रिमेंबर दिस. इनिशियली देयर वाज अ लिमिट कि 100 करोड़ के ऊपर सम इंश्योर्ड रहेगा तो ये सेल्स टर्नओवर दे सकते हैं, या एनुअल टर्नओवर पॉलिसी. स्टॉप या एटॉप बोलते हैं इसको, स्टॉप या एटॉप. स्टॉप इज सेल्स टर्नओवर पॉलिसी या फिर एनुअल टर्नओवर पॉलिसी. लेकिन अभी तो सबके लिए बोला कर दिया है, कोई भी आके एनुअल टर्नओवर पॉलिसी मांगता है. नाउ पॉलिसी कैन कवर इंपोर्ट्स, रिमेंबर दिस. इंपोर्ट कवर कर रहा है, एक्सपोर्ट कवर कर रहा है. इंपोर्ट आने के बाद इनलैंड ट्रांजिट भी कवर हो रहा है. इनलैंड ट्रांजिट के बाद ये डेपो से वो डेपो तक ट्रांसफर करने का वो भी हो रहा है. स्टोरेज वो भी हो रहा है. डोंट यू थिंक दिस इज अ डेंजरस पॉलिसी फॉर पीपल, फॉर फॉर दोज हु आर यू नो सिंगलटन कस्टमर्स? जैसे कि एक ही पॉलिसी लेके आपके पास आए, एक ब्रोकर है, वो आपके पास एक सेल्स टर्नओवर पॉलिसी लेके आया कि भाई मेरे को इसका सेल्स टर्नओवर पॉलिसी चाहिए. You have to minutely look into the matter कि what are the goods, what is the credibility of the proposer in the market. ये सब चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसका सम इंश्योर्ड सम जो रहा 1,500-2,000 करोड़ रुपया, उसका एनुअल टर्नओवर रहा अगर 1,500-2,000 रुपया, एंड इफ ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग मटेरियल फैक्ट्स, देन इट इज अ वेरी डेंजरस पॉलिसी टू गिव. सी क्यों मालूम है? इट इज अ सीमलेस कवर. देखो, it is a seamless cover, that is why it is a dangerous policy. Let me tell you an example. I don't have my writing pad now, otherwise writing pad पे दिखाता था मैं. आज मैंने कनेक्ट ही नहीं किया. Anyways, I'll tell you. कुछ आ रहा है. Can we provide certificates for each transactions? Yes, yes, certainly you can provide. जैसे देखो, देर आर जो प्राइस क्लाइंट्स रहते हैं ना, वो आपको डिक्लेरेशन भेजते हैं. हालांकि इधर पीरियोडिक डिक्लेरेशंस भेजने का जरूरत नहीं है, बट क्लाइंट सेंड यू डिक्लेरेशंस इन ऑर्डर टू कीप चेक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एट देयर एंड एंड व्हाट इज हैपनिंग एट आवर एंड. तो वी कैन इशू सर्टिफिकेट्स. जैसे अपन ओपन पॉलिसी में सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं ना, वैसे ही अपन एनुअल टर्नओवर पॉलिसी में भी सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Goods are coming from a certain warehouse. Okay, they are being imported. Okay, वो goods आके, एक मिनट, is sum insured reduced after each declaration? Yes, sum insured is reduced after each declaration. Yes madam, yes. I'll tell you what I'll do is I will connect this my writing pad and I will show you an example of that. I'll show you. Give me just let me just explain this. So goods goods import हो गए goods, and now they are lying at the site, मतलब lying at the port. पोर्ट पे है, पड़े हुए हैं. 59 डेज हो गए. कितने? 59. 60 डेज तक वो पड़े रह सकते. 59th डे को उनको उठाया किसी ने. 59th डे को उसको उठाया, लेके गए, एक वेयर हाउस में रख दिया, जो वेयर हाउस है इंश्योर्ड का ही. लेकिन
उधर अभी रखा है, उसको ऐसे ही पड़ा है, अभी 10 दिन के बाद उसको उठा के किसी दूसरे डिपो में भेजने का, तो उठा के भेज दिया. एनुअल टर्नओवर पॉलिसी कवर्स point A to point Z, everything. Don't you feel this is a dangerous policy? Yes, it is. क्योंकि वो 59 दिन उधर था, तब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बारिश आ सकती है, there can be rain, there can be miscreants, just poking something inside, there can be people setting it on fire. Okay, वैसे भी कवर्ड है, चलो ठीक है, अभी वो गोडाउन में पड़ा है, उधर भी कुछ भी हो सकता है. यूजुअली हम लोग अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते हैं कि जैसे भाई उधर तक पहुंच गया, हमारा लायबिलिटी खत्म है भाई, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन 10 दिन कर सकते हैं, ठीक है चलो 60 दिन तक कर दी, उसके बाद नहीं भाई. ये सीमलेस कवर है, इंसिडेंटल स्टोरेज कवर कर रहा है, इंसिडेंटल स्टोरेज. ओके, ये when everything is covered under a single policy, shutout cargo is covered in this. Shutout cargo is covered in this. If insured mentions कि ओवर डायमेंशनल कार्गो भी कवर करना है, तो वो भी कवर कर. That makes this a very difficult, dangerous policy. अच्छा, at the end ये सब तो अभी पूरा नहीं है, एंड में उसको सेलर्स कंटिंजेंसी इंश्योरेंस भी दे सकते हैं हम लोग उस इसी के अंदर. Seller's contingency is what I had told you in the very first lecture. Defeasible interest or contingency interest जब मैंने बताया था. If the goods that are received by the buyer are not up to the mark, या are not of the same kind as what he expected, then the risk shifts back to the seller. और जब ये रिस्क सेलर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो वो सेलर्स कंटिंजेंसी इंटरेस्ट हो जाता है. तो वो सेलर को उसका पहले से ही प्रोविजन करके रखना पड़ता है. ये सब इसमें अपने आप कवर हो जाता है. तो इट इज अ वेरी डेंजरस पॉलिसी एंड इट इज एडवाइजेबल टू गिव इट ओनली टू वेरी वेरी प्राइस्ड क्लाइंट्स. अच्छा, एक मिनट, समथिंग इज कमिंग. टेल एंड रिस्क्स, अनफॉर्चुनेटली यस, अनफॉर्चुनेटली. ये तो क्या, अभी तू टेल एंड ही है ना ये भाई, मेरे इधर आके गिर गया है, इधर ही रुका है. यूजुअली टेल एंड रिस्क अगर रहेगा तो हम लोग स्पेसिफिक वॉच पॉलिसी में उसका इंश्योरेंस इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करके फिर बाद में उसको भेजते हैं, isn't it? That is what we do. We perform a risk inspection on the goods and then we send it across. अगर पोर्ट टू पोर्ट अगर कवर है, if the goods are covered from port to port, as the goods reach at the port, the cover ceases. Now it is the responsibility of the buyer to arrange the insurance from that port to his warehouse. That is a tail end risk. That is a tail end risk. But how will he accept a tail end risk? How will an insurer accept a tail end risk? What he will do is he will safeguard himself. He will perform a risk inspection over there. Risk inspection होने के बाद, if the risk engineer says the goods look in good shape, they appear to be not damaged, you can go ahead with it. तब जाके हम लोग वो टेल एंड रिस्क कवर कर सकते हैं. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कवर करो, everything is covered, બધું કવર છે. In sales turnover policy, everything is covered. So that is why sales turnover कभी आप perishable goods को मत दो, and never give this policy to a person who is, not morally उसका थोड़ा ठीक ठाक नहीं है. How will you come to know that is your tax? वो तुम्हारा टैक्ट है, आपको कैसा पता चलेगा? Usually these policies are not taken by any मतलब टॉम डिक हैरी ऐसा कोई नहीं लेता है, क्योंकि प्रीमियम हाई रहता है, सम इंश्योर्ड भी हाई रहता है. ओके, सो दिस कंक्लूड्स द मरीन पार्ट. अभी आप मेरे को पूछो मरीन में और क्या है. आई मीन मरीन कार्गो इंश्योरेंस. आई थिंक आई हैव taken care of all the things that are asked in the exam.
all the things that are asked in the exam, clauses भी काफी किए हैं हम लोगों ने, policies भी की है. uh, yes, there is something coming. Yes, Veena Parabji, your question, my answer to you, yes. Just let me take the writing pad, just a moment. Seller contingency policy sold on which contracts, like CIF? Usually it is CIF only. Kiranji, it is CIF only, yes. Sir, if like sulfur is being unloaded on WAFs or LPG, if contamination or pollution occurred, or roads become slippery by sulfur, will it be covered? It is a liability, na, Mike? If roads are becoming slippery because of the cargo, how is the do you think the cargo will be damaged because of this? No, it is a liability. The person who is owning these ships, the person who is, I'll tell you one example. There is a, I don't know how many of you here have seen this. If you go from this place called Wadkhal Naka, there is a place called Wadkhal Naka somewhere in Raigad district. वहाँ से एक रास्ता अलीबाग जाता है, एक रास्ता जाता है कोंकण में. तो if you go towards that Alibag road, ना, there is a huge steel plant of JSW. अभी JSW का ही आगे थोड़ा जाके धर्मतर पोर्ट है. There is a place called as Dharamtar Port, where ammonium and hydroxide is coming by vessels, and it is loaded by cranes into containers, into silos, जिसके वजह से काफी सारा contamination area में होता है, because it is very difficult to breathe ammonium and hydroxide. Powder है वो, it's powder. If you breathe it, you may suffer through many diseases. तो उन्होंने क्या किया है मालूम है? आजू बाजू का गांव ही खाली कर दिया है, वो पूरा जमीन उन्होंने ले लिया in order to avoid any, and that is a restricted area. You cannot go in that area just like that unless and until you have these passes. Now, if goods are being just transported और उसके वजह से कंटेमिनेशन, गुड्स कंटेमिनेट हो गए तो मरीन में कवर्ड है, लेकिन गुड्स के वजह से कंटेमिनेशन हो गया, वो तो लायबिलिटी है ना. So he has to take the third party liability or environmental liability policy. Okay, Galaxy M31. Am I clear? Okay, so just a moment. I am showing you how this refund is calculated on annual turnover policies. I will show it in the system as well and in principle as well. मैं बताऊंगा आपको ये कैसे कैलकुलेट होता है रिफंड. पहली बात तो it is working on the same principle as open policy, downward adjustment of premium. Okay, downward adjustment of premium में होता क्या है? जैसे जैसे डिक्लेरेशन आते जाते हैं हम लोग उसमें से सबट्रैक्ट करते जाते हैं, बैलेंस वैल्यू में से नेक्स्ट वैल्यू सबट्रैक्ट करते हैं बैलेंस, एंड एंड में जो बचता है उसका रिफंड कर देते हैं. Isn't it? That is what is the procedure followed in marine open policy. The same procedure is followed in annual turnover policy only, but annual turnover policy में और एक अजीब चीज है which is called as MDP,
मिनिमम डिपॉजिट प्रीमियम। मिनिमम डिपॉजिट प्रीमियम जैसे आपके फायर पॉलिसी में, फ्लोटर डिक्लेरेशन पॉलिसीज में 80% रिटेंशन रहता है, या फिर किसी पॉलिसी में 50% रिटेंशन ऑफ प्रीमियम रहता है ना, कंपल्सरी रिटेंशन ऑफ प्रीमियम। वैसे ही मरीन के सेल्स टर्नओवर पॉलिसी में देयर कैन बी एमडीपी, दैट इज मिनिमम डिपॉजिट प्रीमियम। देयर आर सम पॉलिसीज व्हिच डू नॉट रिक्वायर एमडीपी, लेकिन स्टिल अभी आई एम गोइंग टू राइट, just let me share this page first. I hope everyone is able to see this. Okay, so 1st of January 2021 से लेकर 31st of December 2021, ये है एक एनुअल टर्नओवर पॉलिसी। ओके, जैन, अभी ये मंथ वाइज डिक्लेरेशन नहीं आता, इसका कभी भी डिक्लेरेशन आ सकता है। Say for example, let us assume कि we receive 12 declarations. Let us assume that I have currently received whatever annual turnover policy मेरे पास है आज तक, आज मतलब आज मैंने 49th डिक्लेरेशन मारा है, so there is no limit for declaration. ये 10 डिक्लेरेशन, अच्छा इधर डेट डालने का है, वो डेट हो गए तो हम लोग को पता चले। Let us assume that it is 500 crores sum insured. पहला डिक्लेरेशन आया मेरे को 50 करोड़ का, तो इधर बैलेंस कितना बचा, 450 करोड़। दूसरा डिक्लेरेशन आया मेरे को 30 करोड़ का, तो इधर बैलेंस कितना बचा, 420 करोड़। इधर तीसरा आया मेरे को 20 करोड़ का, तो इधर बचा मेरे पास 400 करोड़। चौथा आया मेरे को 40 करोड़ का, तो इधर मेरे पास बचा 360 करोड़। ओके, सो लेट अस अज्यूम कि ऐसा ऐसा कर करके 10 डिक्लेरेशन ही आया, इधर 30 आया, इधर 20 आया, इधर 10 ही आया, इधर 20 आया, इधर 20 आया और इधर 30 आया। ओके, और जो कुछ बचा है वो इधर बचा है। दिस इज द डिक्लेयर्ड सम इंश्योर्ड and this is the provisional sum insured. It is exactly, the logic is same exactly as annual turnover, क्या बोलते हैं उसको, ओपन पॉलिसी। अभी 50 और 30, 80, 100, 140, 170, 190, 200, 240 and 30, 270। 270 करोड़ उसने डिक्लेयर किया है आउट ऑफ 500 करोड़। सो 500 minus 270, a refund of 130, कितना 230 उसको जाना चाहिए। मतलब 230 करोड़ पे जो 500 करोड़ पे जो प्रीमियम का रेट लगाया है, से फॉर एग्जांपल 0.1 लगाया है, तो 230 करोड़ इंटू 0.1 जो आता है वो रिफंड जाएगा। नाउ हाउ डू यू पास दिस रिफंड इन द सिस्टम? आपने अगर ये 10 एंट्री किया है ना उधर, तो सिस्टम में वो बोलता है कि अमल में क्या यू कैनॉट पुट मोर देन 4 डिक्लेरेशंस। तो 270 है ना ये। एक मिनट, सम क्वेश्चन कमिंग ओवर हियर। Sir, if zero sum insured declaration is given, then the entire sum insured is deemed to be declared. As I told you, the entire sum insured is deemed to be declared. तो कोई रिफंड नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो डिक्लेरेशंस दे रहा है तो रिफंड बनता है। तो ये 270 करोड़ ना, यू डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा, 6.75। तो यू delete all these declarations and just enter 4 declarations, each of 6.75 crores. जैसे ही आप ये करोगे, एंटर करोगे, go to the first page and first page
पे एडजस्ट लिखा है, वो एडजस्ट कर दो, क्लिक कर दो, हो जाएगा तुम्हारा. And if it does not happen, give me a call. I will help you out. Okay. If it does not happen, just give me a call. I will help you out definitely. This is my number. This is my number. So any issue regarding marine fire, आप मेरे को पूछ सकते हो बिंदास, बेझिझक फोन करके कभी भी. Okay. And do insured ask for proof of sales? I mean insurer. Veena madam, insurer, isn't it? Insured. Yeah, insurer. Ask proof of sales. Depends on who is your client. Ideally, it is not required. It is not required. Okay. So you just try settling this, and if it does not happen, just give me a call. I will solve that. Acha. Now, any questions pertaining to marine cargo? Because we have done a comprehensive study of marine cargo now. I think definitely. Okay. There are questions for me. I told you, Galaxy M31. If no declaration is given, the entire sum insured is deemed to be declared, and there is no refund at the end. Okay, no refund at the end. But remember, एक याद रखना, अगर क्लेम आया और भाई साहब ने एक भी डिक्लेरेशन दिया नहीं है, Galaxy M31, just pay attention. If there is no declaration given and if there is a claim lodged, on which declaration will you register the claim? Are you getting it? If there is no declaration, there is no refund, but there has to be no claim. और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा डिक्लेरेशन ही नहीं था तो मेरा प्रीमियम वापस दे दो मेरे को, मैंने कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया तो नो. ओके. अच्छा, देयर आर नो, इफ मैंने जब सेल्स टर्नओवर पॉलिसी मैंने बताया था, आई विल शेयर दैट पेज. The second point, there is no need to make periodic declarations as full annual sales turnover is considered. अच्छा, ये नहीं लिखा. Yes. There is absolutely no necessity. लेकिन फिर उस केस में रिफंड नहीं बनेगा. And in case if claim comes, then he has to provide a declaration under which that claim has come. तभी technically हम लोग claim register कर सकते हैं. This is for the sake of our system. Okay. अच्छा, एक मिनट, इधर questions आ रहे हैं काफी सारे. Sir, what if only one declaration given on last day of policy? I have received that. मतलब 500 करोड़ का पॉलिसी था, BS6 प्रोजेक्ट चल रहा है बठिंडा रिफाइनरी, BS6 पेट्रोलियम जो है, 500 करोड़ का पॉलिसी था. He did not give me one single declaration, and at the end he gave me a declaration of 371 crores. Okay, 371 crores दिया तो बचा हुआ जो 129 crores है उस पे रिफंड बनता है उसका. It has to be. If claim is valid, if declaration shared after the loss, if claim is valid, it has to be paid. Sir, if zero amount declaration, अगर इधर देखो डिक्लेरेशन का कोई अमाउंट, मतलब डिक्लेरेशन नहीं दिया तो भी एनुअल टर्नओवर पॉलिसी चलता है, बट उसमें कोई रिफंड नहीं बनेगा. एंड इफ देयर इज अ क्लेम, then in order to register that claim in our books, we need a declaration.
और अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास ऐसा डिक्लेरेशन ही नहीं है, मेरे पास ऐसा डिक्लेयर, तो फिर भाई क्लेम कैसे हुआ? इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तब जाके क्लेम हुआ है ना, तो उसका डिक्लेरेशन तो आपको दे दे, isn't it? But it is a good practice to declare under annual turnover policy. The reason behind that is you keep track of how much sum insured has been exhausted. Okay, कितना sum insured has been exhausted, कितना बचा है. अगर बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है और मेरा और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, तो I can increase the sum insured by paying extra premium. That is a good practice. Unless you know कि मेरा एनुअली इतना ही टर्नओवर होने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू ग्रो, इतना ही होने वाला है, तो डिक्लेरेशन मत भेजो. लेकिन जब क्लेम आएगा तो उसका पर्टिकुलर डिक्लेरेशन भेजना पड़ता है ऐसा, अदरवाइज द क्लेम कैन नॉट बी लॉन्च्ड. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग. जीरो डिक्लेरेशन दोगे चलेगा, रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन क्लेम आएगा तो उसका डिक्लेरेशन देना, क्योंकि उस पर क्लेम लॉन्च होगा. अच्छा, एनी लिमिट ऑफ रिटेंशन, it is decided by the policy underwriter, that is our competent authority. वो जैसा reinsurance arrange करता है, there is no 50% 80% retention. वो जो है वो fire float declaration में है और इसमें है. इधर minimum deposit premium रहता है, minimum deposit premium रहता है, but it varies from case to case. Okay, is it practice to ask for P&L statement of from insured? Depends on who is your insured. Okay, if it is a priced client, then you get their P&L from the internet only. Okay, उनका पूरा TB P&L सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है. बट इफ इट इज अ प्राइस्ड क्लाइंट तो नहीं लेना चाहिए. अगर ऐसा ही किसी ने लाया है, still it is not, I mean, we do not require this for underwriting. Okay, any more questions? I want questions because I'm liking to, I'm actually enjoying giving answers to your questions. Yes. Clause paramount is, see, I had told you yesterday, Kiran, clause paramount is the governing clause, the clause that governs the policy. If you pay me the premium, I will do the needful. If you pay me the premium, I will cover your, I will insure your risk and subsequently indemnify you in case of a loss due to an insured peril. This is clause paramount. The actual principle on which insurance works, marine, any policy works, is called as a clause paramount. Okay, freight contingency. As I told you, freight is the money that is earned by the vessel. If during claim, if we will only ask the declaration only in reference to the claim, then refund amount would be huge. Absolutely correct. तब जाके उसको पूरा डिक्लेयर करना ही पड़ेगा ना इवेंचुअली, तब जाके उसको पूरा इवेंचुअली डिक्लेयर ही करना पड़ेगा. Are you understanding this? If he gives only one declaration which is for the claim, तो आप बोलेंगे अरे अभी तो इसमें रिफंड बहुत सारा होना, मतलब 50 करोड़ का जो ये था, 50 करोड़ का जो एक ट्रांजैक्शन था, उसका ही उसने डिक्लेरेशन दिया. पॉलिसी 500 करोड़ का, तो 450 करोड़ का रिफंड दे दे क्या हम लोग? नहीं. If the insured is giving you regular declarations, and at the end he says that I have given all the declarations to you, then and only then you can adjust it. आपने सिर्फ एक डिक्लेरेशन लिया और बाकी का सम इंश्योर्ड पे आप उसको रिफंड देने वाला है, मतलब आप एकदम बहुत अच्छा अंडरराइटर है, isn't it? Everything has to be asked for. Okay. पर्टिकुलर चार्जेस, पर्टिकुलर एवरेज, जनरल एवरेज में क्या डिफरेंस है? पर्टिकुलर एवरेज इज पार्शियल लॉस, पर्टिकुलर चार्जेस इज
उसको अवॉइड करने के लिए हुआ जो आपको चार्जेस लगा है वो पर्टिकुलर चार्ज. General average is what I told yesterday. It is due to extreme circumstances. अगर आपको cargo sacrifice करना पड़ा तो general average. General average charges is the charges incurred to perform this act of sacrificing these goods. Okay. Particular is partial. Remember this. Particular is partial. And there is one more thing. Do you know what is the difference between total loss and actual total, a constructive total loss? Does anyone know? TL and CTL के बीच में क्या फर्क है? उसके पहले गैलेक्सी M31 ने पूछा है, सर पैसेंजर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी is applicable in case of cruiser ship. If he has taken that extension, it is applicable. अदरवाइज अगर क्रूजर शिप रहेगा तो उसका हल एंड मशीनरी कवर होता है सिर्फ हल में. ओके. आगे हल मशीनरी एंड फ्रेट ही कवर होता है. कॉस्ट ऑफ रिट्राइविंग द कार्गो इज मोर देन वैल्यू ऑफ कार्गो. Kalpesh Katake has given me the answer for the difference between TL and CTL. TL, total loss. टोटल लॉस मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिर गया और एक एक पुर्जा उसका ठा हो गया. ओके. लेकिन फिर भी अभी गाड़ी समझो आपका 14 लाख का है, वो गाड़ी को वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए अगर आपको 12 लाख रुपए लग गए तो इट इज अ टोटल लॉस. बट आपको वो गाड़ी को वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए अगर आपको 15 लाख रुपए लगने वाले, 14 लाख की गाड़ी को वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए अगर इफ यू आर गोइंग टू इनकर 15 lakhs of amount, then it is a constructive total loss. In CTL, recovering the goods is more than the value of the goods. That is what is correctly written by Sham Nair. Also, Kalpesh has written it correctly. Cost of retrieving the cargo is more than the actual value of the cargo. That is called as constructive total loss. Okay. Yes. Anything more? Freight contingency. Oh, yes. Freight is the amount of freight is the kamai of the ship. जो शिप कमाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट, भाड़ा. ओके. इन केस ऑफ एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, इफ द फ्रेट हैज ड्रॉप डाउन, जैसा आजकल है, शिपिंग मार्केट इज एक्सट्रीमली पैथेटिक. फ्रेट हैज हिट रॉक बॉटम. चार्टरर्स के पास पैसा नहीं है फ्यूल भरने का, इतना बेकार हालत चल रहा है. शिपिंग इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इज अंडर, मतलब इट इज ऑपरेटिंग एट अंडर डायर सर्कमस्टेंसेस. तो फ्रेट कंटिंजेंसी इज, सपोज आपको 10 रुपए मिल रहे थे एक राउंड के, लेकिन कल को अचानक बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कंडीशंस इन द मार्केट the freight has dropped to 5 rupees. So there is a loss of freight, ना, loss of freight by you. तो वो contingency insure करने के लिए, freight contingency insurance, in order to take care of the loss of freight. Okay. However, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आज तक मैंने देखा नहीं है जितने 13.2 है. Actual practice basis of valuation CIF plus up to what percentage can be 10, not more than 10. Okay.
You are not taking into consideration increased value insurance here. Please take a note of this. You are just taking care of the incidental charges over here, plus 10%. Yeah, plus 10%. 20% देना है तो दो भाई, तुम लोग अच्छे अंडरराइटर हो, पर मतलब अच्छा प्रीमियम लाओगे. But it is 10%. CF plus 10%. In fact, the insured himself will tell you 10%. Unless because there is, अगर उसका गुड्स यहाँ से यहाँ आने वाला है, मेरे को बताओ इतना मार्केट वैल्यू बढ़ने वाला है 10 दिन में, समझो इतना नहीं बढ़ा. Unless and until he is operating, I mean he is bringing in something which is extremely valuable. CF plus 10% is correct. आगे. Any more questions? If SCI ship moves from Chennai to Andaman, she meets damage with cargo, cattle, vehicle and passenger, loss due to insured peril. Will it be covered? What do you want to cover? Do you want to cover the vessel or do you want to cover the cargo? ये मरीन हल का क्वेश्चन है कि मरीन कार्गो का क्वेश्चन है, ये बताओ मेरे को. Do you want to cover the vessel or do you want to cover the cargo? Achha. If the peril is insured, whatever goods are there on the vessel of this SCI, Shipping Corporation of India का जो कोई शिप है, चेन्नई टू अंडमान जा रहा है, और अगर वेसल पे जो कार्गो है वो डैमेज हुआ किसी इंश्योर्ड पेरिल से, कार्गो का क्लेम विल बी पेएबल. ओके, इट विल बी पेएबल. कैटल रहेगा तो उसका मॉनेटरी वैल्यू जो रहेगा वो पेएबल. इमोशनल वैल्यू इज नॉट पेएबल. व्हीकल्स रहेंगे, इट इज पेएबल. ऑफ कोर्स हर एक मरीन पॉलिसी पे डिडक्टिबल रहता है, तो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कार्गो. कार्गो कितना है, अगर तो उतना उसका डिडक्टिबल लगता है. जैसे कि हम लोग लगाते हैं 0.5% ऑफ द क्लेम अमाउंट विल बी, तुम लोग जाओ भाड़ में, अपना 0.5% तुम लोग देख लो, बाकी का हम लोग दे देंगे. जैसे मेगा इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसमें जीआई काउंसिल ने लिख के रखा है कि भाई 50 लाख इज द डिडक्टिबल. कोई भी क्लेम होएगा तो 50 लाख डिडक्टिबल है मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी में. कोई भी क्लेम होएगा तो 50 लाख तक तुम लोग देख लो, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं. ओके, सो इफ देयर इज फायर और उधर बंदा खड़ा है, देख रहा है कि अरे फायर हो रहा है, ही इज नॉट टेकिंग measures to extinguish that fire. ये कोई measures नहीं ले रहा है, वो देख रहा है सिर्फ, अरे आग लग रहा है, क्योंकि अभी तक 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, मैं रुकूंगा, देखूंगा जरा. वो अभी 50 लाख क्रॉस हो गया है, अभी मैं आग बुझाने जाऊंगा. ठीक है, चलो 60-70 लाख का क्लेम हो गया, you will get only 20 lakhs rupees under mega policy, क्योंकि 50 लाख ये. But just because you did not extinguish that fire on time, it has triggered a business interruption loss somewhere else. तो हम लोग जब मेगा पॉलिसी का प्रेजेंटेशन देते हैं पावर ग्रिड, तो हम लोग ये पॉइंट रखते हैं उनके साथ. यस, फ्रैंचाइज आप इसके फंदे में मत पड़ो. फ्रैंचाइज, ड्यूटी वगैरह, लीव इट, इट इज नेवर आस्क्ड इन द एग्जाम, डोंट वरी. Difference between open cover and open policy. Open cover is an agreement, it is a non-stamped document, and it is an agreement between the insured and the insurer. Open cover जब issue होता है तो 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं लिया जाता है, but all the terms and conditions are laid down in an open cover. Open policy is a policy, so it is a stamped document. It is a stamped document, and the premium is taken right at the issuance of the policy. Open cover में
ओपन कवर जब इशू होता है तो 1 रुपया देने का जरूरत नहीं रहता, जब उसके अंदर ट्रांजिट आएगा तब आपको प्रीमियम देना। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ओपन पॉलिसी में अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड का रिफंड हम लोग दे सकते हैं, ओपन कवर में ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जैसे डिक्लेरेशन आते हैं हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते जाते हैं। राजकुमार साहब, दैट वाज योर आंसर। Special declaration policy has been discontinued by all general insurance companies. So let us not touch that part. Special declaration policy अपन ने निकाल दिया। ओके, ओपन पॉलिसी ही अभी अपना स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी। So you won't be asked a question on HDP. If there is any fixed period for open cover, fixed period for open cover 1 साल, 1 साल, 1 साल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अंदर आपका जितना भी ट्रांजिट हो रहा है फलाना से डिमका तक सब कवर किया जाएगा। ओके, दैट इज फिक्स्ड पीरियड और व्हाट एवर यू से, दैट इज द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज इन मरीन आर 1 ईयर। ओके, आप एक्सटेंड कर सकते हो, शॉर्ट पीरियड पे नहीं दे सकते। Try issuing a short period policy in our system, it won't allow। आपको एनुअल इशू करना पड़ेगा, फिर आपको टिकट रेस करके उसको कम पीरियड उसका करना पड़ेगा, एनुअल पॉलिसी होगी। ओके, आगे एनीवन एल्स? सर, क्लाइंट को सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए पोर्टल देते हु ओवरसीज भी होता है, तो वो ओपन कवर है या ओपन पॉलिसी है? दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अंडर ओपन पॉलिसी ऑल्सो यू कैन इशू सर्टिफिकेट्स, अंडर ओपन कवर ऑल्सो यू कैन इशू सर्टिफिकेट्स, लेकिन उसके लिए अपने को वो क्लाइंट को पोर्टल देना पड़ता है, एंड दैट परमिशन यू हैव टू टेक इट फ्रॉम हेड ऑफिस। ओपन पॉलिसी में भी सर्टिफिकेट्स इशू होता है, ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ। Open policy also can be given for abroad destinations. So ऐसा कुछ नहीं, so it can be anything. Anyone else? So I think everyone is happy with the marine cargo, I think. So that we can start with marine hull। कल को अपन मरीन हल कर सकते हैं, जहाँ पे शिप रिपेयरर्स, हल एंड मशीनरी पॉलिसी, वॉर, फिर देर आर न्यूमरस अदर पॉलिसीज लाइक जो मैंने सिंगल बॉय मोरिंग बोला था, वो सब अपन कल करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम दिस आल्सो, केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी इट फॉर टुमारो। कल कितने बजे लेक्चर है मुझे पता नहीं है, वो कल ही पता चलेगा, बट अगर नहीं हुआ तो कल अपन एक्सटेंड करके वो खत्म कर देंगे। Just as today we took care of marine cargo, we will take care of marine hull tomorrow. Okay, should we call it a day then? Okay, thank you very much for listening to me patiently. Thank you, and good night to everyone. Yeah, thank you.